नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन पल्स और मैं हूं आपका दोस्त हरीश गोड़। दोस्तों, एक बार फिर हम बजट 2022 की एनालिसिस में आपके साथ शामिल हैं और हमारे साथ हमारे डायरेक्ट टैक्स के टेक्निकल एक्सपर्ट सीए विपिन गर्ग जी मौजूद हैं और इनके साथ में हम बात करेंगे कि जो बजट पेश किया गया संसद में, उस बजट में क्या खास आया है डायरेक्ट टैक्स को लेकर के, तो उस पर हमारी चर्चा होने वाली है। तो हम उसी पर बात करने वाले हैं सर के साथ और जानने वाले हैं कि क्या खास आया है इस डायरेक्ट टैक्स में। सर, थोड़ा सा आप हमें बताइए कि इस डायरेक्ट टैक्स में आज जो पेश हुआ है उसमें क्या खास आया है। आज के बजट में सो फार एज डायरेक्ट टैक्सेस इज कंसर्न्ड, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आम एक्सपेक्टेशन होती है कि एग्जेम्पशन लिमिट्स में कोई चेंज हो जाएगा, हाउसिंग लोन के बेनिफिट्स में कोई चेंज हो जाएगा, कुछ डिडक्शंस में कोई चेंज हो जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें नहीं कंसीडर हुई हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक बहुत पॉपुलर डिमांड चल रही थी गवर्नमेंट से कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम कर दिया है जी, स्पेसिफाइड रेट भी आप ले आए, लेकिन जो एलएलपी का रेट है वो 30% पे चल रहा है, 30% पर ही चल रहा है। और उसी तरीके से कंपेयर करें तो फिर जो हायर इनकम ग्रुप है इंडिविजुअल में, उनका भी टैक्स रेट फिर 30% प्लस सरचार्ज सब हो जाता है। सो ये एक एनॉमली चल रही है जहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स रेट नीचे आ गया है जी, एलएलपी भी विज़ कॉर्पोरेट जैसा बिजनेस वेंचर ही सब कुछ है। तो बिजनेस इनकम को आप टैक्स कर रहे हो कॉर्पोरेट में, तो एलएलपी की इनकम को भी उसी तरीके के रेट पर टैक्स होना चाहिए, उसको भी उसी तरह के कंसेशन रेट दे देने चाहिए। अगर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ भी दे दो 15%। जी जी जी, वो नहीं हुआ है। वो क्या उनका लॉजिक है, वी फील टू अंडरस्टैंड। लाइकवाइज जो हायर इनकम ग्रुप्स हैं उनके टैक्स रेट में क्यों आप कंसेशन नहीं देना चाहते हो, इसका भी उनका क्या लॉजिक है, वी फील टू अंडरस्टैंड। बट एनीवेज, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो भी आया है उसमें इस तरह के कोई एक्सपेक्टेड रिलैक्सेशंस नहीं आए हैं। जो आया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। एक गवर्नमेंट ने अब जो असेसमेंट रिजीम चला है, जो फीसलेस का असेसमेंट रिजीम चला है उसमें, और आईटी के चलते आईटी इनेबल्ड असेसमेंट है सब, तो जो 26 AS में इंफॉर्मेशन आती थी वो अब काफ़ी इंफॉर्मेशन बढ़ गई है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेटा है। उसके चलते उन्होंने ये कहा कि कपल्ड विद असेसमेंट की टाइमलाइंस, रिटर्न्स फाइलिंग के टाइमलाइंस, ये गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली बजट आफ्टर बजट कम किए हैं। सो गिवन दैट, उन्होंने एक स्कीम सी लेकर आए हैं कि अगर बाद में आपको ये दिखाई दे जाए कि आपकी कोई इनकम छूट गई थी, ओमिट हो गई, यू ओमिटेड टू रिपोर्ट सम इनकम इन योर रेगुलर रिटर्न और द बिलेटेड रिटर्न और द रिवाइज्ड रिटर्न लेटर ऑन, then you can come to the department and voluntarily declare your additional income so omitted। ये जो 2 साल वाला इन्होंने, ये जो 2 साल वाला किया, हाँ? तो उसमें एक 2 साल की आप कह सकते हो, कहना चाहो तो वर्चुअल आइडियाज जैसी है जी। ये रिवाइज रिटर्न नहीं कह रहे हैं उसको, अपडेटेड रिटर्न कह रहे हैं। अपडेटेड मीन्स जो रिटर्न इनकम आपकी ओरिजिनली है, इंक्लूडिंग बिलेटेड रिटर्न, इंक्लूडेड रिवाइज रिटर्न जी, जो ओरिजिनल फाइनल रिटर्न है उसको आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, का मतलब कि आप उसमें कुछ इनकम ऐड करना चाह रहे हो। आप लॉस बढ़ाना चाह रहे हो, अलाउड नहीं है। आप रिफंड बढ़ाना चाह रहे हो, अलाउड नहीं है। ओके, आप इनकम बढ़ाना चाह रहे हो, यानी कि एडिशनल कुछ डिक्लेयर करना चाह रहे हो, तो आप आ सकते हो। 2 साल का विंडो आपको दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वासी काइंड ऑफ आइडियस है, क्योंकि वो एडिशनल टैक्स ले रहे हैं। वो कहते हैं विद इन 1 ईयर अगर आप आ रहे हो तो जो आपका टैक्स बनता है उसका 25% एडिशनल टैक्स दे दो, और सेकेंड ईयर में आ रहे हो तो जो रेगुलर टैक्स बनता है उसका 50% एडिशनल टैक्स दे दो। और हम आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने देंगे। 139(8A) 8A नया क्लॉज वो लेकर आए, सब सेक्शन लेकर आए 139 में, एंड अकॉर्डिंगली 140 B एक सेक्शन लेकर आए जहाँ पर एडिशनल टैक्स की बात है। अकॉर्डिंगली आपके इंटरेस्ट वगैरह के कंप्यूटेशन होंगे। तो सर, कहीं ना कहीं ये तो एक अलग ही फैक्टर सामने आया, जहाँ पर हम लोग यही समझ रहे थे अभी तक, जो बजट को देखकर प्राइमा फेसी समझ में आ रहा था कि ये रिवाइज रिटर्न के लिए आया है। ये रिवाइज रिटर्न नहीं है जी। रिवाइज रिटर्न जो पुराना रिजीम है, दिसंबर तक आप रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इट इज़ अपग्रेडेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न। इट इज़ काइंड ऑफ अ डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल इनकम विद अ कॉस्ट। Within 1 year if you disclose 25%, second year if you disclose 50%,
So it is that kind of a scheme. It is that kind of a scheme provided your assessment doesn't stand completed 143.3. वही complete हो जाएगा तो फिर ये नहीं होगा. So this is a thing which is a new thing, which is a regular thing, that there is a window, whatever window is available, that you can report your additional income. Another thing which I have seen in this budget is, and it is first time I am looking like this, there is a detailed discussion in the memorandum of many of the judgments of the high courts and even tribunals, which somehow the government thinks that are not okay. They are not in favor of department. So in the memorandum explaining the budget, they have discussed all those judgments and they have overruled them by way of an amendment. Say for example, there were some favorable judgments that the education cess, higher education cess, health cess, cess will be a allowable deduction, though income tax may not be. So income tax, we know that it is not a deduction allowable, but so far as cess is concerned, there were some favorable judgments that cess can be allowed as a deduction because there is no specific law as such. लेकिन सर अब इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया है. So discussing after all those judgments, they say that that was never the intent of the legislature and therefore they have overruled it and given up. They have come up with a explanation that cess will never be allowed as a deduction because it is nothing but an additional surcharge, and surcharge is nothing but an income tax charge on income. So whatever is the charge on income is not deductible under section 40. So this cess also will not be deductible. इन्होंने इसे इनकम टैक्स का ही पार्ट माना, जो एडिशनल सरचार्ज. माना. So mana in the sense that it is an interpretation. So going by the provisions of the respective finance act, it is an additional surcharge and therefore it is not allowable irrespective of the judgments which we are having in our favor, and therefore they have come up with the explanation. That is one. Another thing is that there used to be, there are 14 capital A disallowances, that if you are having the expenditure towards the exempt income, that portion of the expenditure is not allowed. There is a CBDT circular out of there. So the dispute was, if in a particular year the exempt income is nil, whether still there can be any disallowance under 14 capital A. So we are having high courts in our favor that if there is no exempt income at all in the particular assessment year, then there cannot be any disallowance under 14 capital A irrespective of the CBDT circular. This they have discussed and they have come up with an explanation that no, even if there is no exempt income in that particular year is nil, still if there is an expenditure which is relating to the exempt income, I mean which pertains to the earning of the exempt income, though in that particular income it may not be so, it may be in the subsequent year that is there. So still that expenditure, that proportionate expenditure is to be disallowed. So that they have come up with the explanation. So that is another thing. Likewise, there were differing judgments so far as the expenditure of the pharma companies are concerned, which they incur on the traveling, conferences, gifts, this, that, on account of medical practitioners. So there was a dispute that as per the MCI regulation, the medical practitioners are not allowed to accept all these freebies. But then there was a dispute in the taxation in the hands of the pharma companies. The argument was that the MCI regulations are applicable to the medical practitioners, not to the pharma companies. So far as the pharma companies are concerned, their expenditure is wholly and exclusively for the purpose of the business, and there is no law which prohibits them to do these kind of expenditures. So we were having some judgments in our favor, some judgments not in our favor, depending upon different tribunal judgments. So after discussing all the judgments, all the relevant judgments, now the memorandum says the view that it is prohibited by law will prevail. मतलब आप इन्होंने इसको भी डिसअलाउ कर दिया, इसको भी एक्सप्लेनेशन डाल के क्लैरिफाई कर दिया कि इवन इन द हैंड्स ऑफ फार्मा कंपनीज, टेक्निकली मे बी इट कैन बी सेड दैट MCI regulation doesn't apply to the pharma companies per se, but the thing is that this particular transaction, this particular freebies is prohibited by law, though in the hands of recipient, but it is prohibited by law. So it is not the in whose hands, I mean regulations apply to whom, that is not relevant. What is relevant is what are the transactions which are covered by the regulations
and therefore these kind of expenditure will not be allowed. So it is, if you go by the memorandum, there is a detailed discussion on the judicial interpretation of these issues, and then they have come up with the explanations to overcome those kind of things. So this is new. One thing is COVID related, because earlier also they have come up with the press release that in case of families who are suffering from COVID, there have been instances that families have received money from neighbors, from friends, like that, for the treatment of the COVID, or maybe there is a unfortunate death in the family, then they have received some kind of ex gratia from friends and relatives. So in general law, whatever you receive other than relative will be kind of a gift, other income, 56(2)(10). So that was a hardship. So they earlier also came up with an press release. So then, so far as faceless assessment scheme is concerned, there are certain changes, certain revisions to do away with the anomalies which were there, and the particular point is that now the oral hearing is a right, because there have already been judgments of the different high courts that oral hearing is a right. So they have incorporated that. So you will be allowed a oral hearing. In last, they came up with the idea of faceless appeal system even at the level of ITAT. They came up with the enabling provision that they will notify the scheme and all that. That they have deferred, and rightly so. Actually, ITAT technically is a civil court and it is governed by its own procedure. So CBDT cannot come up with a procedure for ITAT. They cannot do that. If they can do it, then there will be some legal hassles. So they have clearly said that we will consult with the Ministry of Law, and because ITAT is governed by its own procedure, being a civil court, so those things are being deferred as of now. It will come whenever it will come. So for now it is deferred. It is not going to be there soon. Another thing is that there are changes in TDS provisions and TCS provisions. Every year they do it. So only one change I will tell you, that so far as immovable property sale purchase is concerned, 1% is the rate of TDS. Now that will be on the basis of stamp duty value. I mean, if the stamp duty value is higher, then even TDS will be on stamp duty value. Earlier it was on actual transaction, irrespective of it is higher or lower. But now that stamp duty thing, they have come up with TDS provision also. I suppose these are the broad changes which are there in the budget I could recollect. Rest you will see when we all go through the fine print. So that's it. Thank you. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे चीज़ें निकाल करके हम लोगों को बताई. हमारे प्रोफेशनल्स को काफ़ी मदद मिलेगी इस टेक्निकल एनालिसिस से जो इस बजट में आए हैं बदलाव. उन बदलाव को लेकर के सर के साथ में जो हमारा डिस्कशन रहा, वो डिस्कशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा. तो आप ऐसे ही हमारे और वीडियो देखते रहें, क्योंकि अभी और भी टेक्निकल सेशंस हमारे बाकी हैं और उनमें भी हम बजट के जो भी आउटकम्स निकले हैं उन पर बात करते रहेंगे. तो आप हमारे साथ जुड़े रहें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू.